अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी फ्रूट केक है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। Welcome to our channel. Please subscribe to our channel and hit the bell icon. फ्रूट केक के लिए हम पहले फ्रूट्स को सोक कर लेंगे। इसका फर्स्ट प्रोसेस 20 ग्राम्स क्रैनबेरीज, 20 ग्राम्स काला किशमिश या ब्लैक रेजिन्स, 12 डेट्स, 10 से 12 एप्रिकॉट्स, 50 ग्राम्स टूटी फ्रूटी, गोल्डन रेजिन्स, 20 grams glazed cherries, 20 grams crystallized ginger, ये मीठी होती है। Orange juice, हम इसको ओवरनाइट सोक कर लेंगे ताकि फ्रूट्स अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। केक का दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम केक की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए अनसॉल्टेड बटर, बटर लाइट कलर का हो गया है और एरी हो गया है। इसको मैंने 5 मिनट बीट कर लिया था। अब हम इसमें लाइट ब्राउन कलर शुगर ऐड करेंगे, 1 कप, और इसको फिर से बीट कर लेंगे। अब हम इसमें 4 अंडे ऐड कर लेंगे, 1 एट ए टाइम। One tablespoon vanilla essence, 1/4 teaspoon cinnamon powder, 1/4 teaspoon नमक। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। grams, 2 tablespoon coffee liqueur,
सोक किए हुए फ्रूट्स अब इसमें ऐड कर लेंगे। चॉप किए हुए आलमंड्स, इसको आप बेक कर लेंगे 180 डिग्री सेल्सियस 1.5 आवर्स के लिए। इसको आप बीच में चेक करते रहें। केक पूरी तरह से ठंडा हो गया है। इसको आप 5 से 6 घंटे तक इसी तरह रख लें ताकि अच्छा मॉइस्ट और डेंस हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप, केक को हम पोक कर लेंगे एक स्क्यूअर की मदद। अब हम केक को ऑरेंज जूस से फीड करेंगे ताकि इसके सारे जूसेस अंदर सोक हो जाएं और केक। मैंने 4 बड़े टेबलस्पून जूस इसमें सोक किया है। आप केक को डायरेक्ट ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा आइसिंग करूँगी उसके ऊपर। फेस्टिव सीजन है इसीलिए। ये फ्रेश क्रीम है, इसको थोड़ा सा बीट कर लेंगे। दो टेबलस्पून आइसिंग शुगर है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हम इसकी आइसिंग करेंगे, बहुत ही सिंपल आइसिंग है। थोड़ा सा लेमन जेस्ट ऊपर से, थोड़े से ग्लेज चेरीज डेकोरेशन के लिए, टूटी फ्रूटी। रेसिपी बहुत ही अच्छी बनी है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।